Welcome to the video. In this video, we will discuss about the second experiment of MSc 4th semester, and this experiment is of organic chemistry. So basically, we will see the object of this experiment. So to separate and determine the RF value of a given carbohydrate mixture, जो कि ग्लूकोज और मेल्टोज का है, यूजिंग द असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. यहाँ पे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से हमें कोई कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर दिया हुआ है, वहाँ से हमें आर एफ वैल्यू डिटरमाइन करना है. सो सॉल्वेंट सिस्टम इन एन ब्यूटेनॉल 28 ml है, pyridine 12 ml एंड डिस्टिल्ड वाटर 100 ml. द लोकेटिंग रिएजेंट आर एनिलीन जो कि हमारा 1.5 cc चाहिए, फिथैलिक एसिड हमारा 1.6 ग्राम, एसीटोन 95 ml एंड डिस्टिल्ड वाटर 5 ml चाहिए. नाउ वी विल सी द थियरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. So basically, chromatography is a modern technique first discovered by a Sweat in 1903 for the separation of colored substances into a individual component. It is a type of partition chromatography in which substances are distributed between two liquid phases. One phase is the stationary phase, and usually water is held in the fibers of the papers. The other phase is the mobile phase, which is the developing solvent that moves along the paper. During the process, the components of the mixture begin to separate, migrating at different rates and appearing as a spots at different positions on the paper. Now we will see its procedure. In this technique, a drop of the test solution is applied as a small spot on the chromatographic paper and is allowed to dry. The spot should be placed near the edge of the paper, and this paper is then placed in a closed chamber and its edge is dipped into the solvent called the developing solvent. Then, as the chromatographic paper absorbs the liquid through capillary action, the solvent moves upward and interacts with the test tube solution, separating its component at different speeds. Once the solvent has carried the solute to a suitable height, the paper is dried and the various spots are visualized using a visualizing agent. Then, the movement of the solute relative to the solvent is expressed in terms of the RF value, that is calculated as the formula of the RF value is distance traveled by the solute from the origin line upon distance traveled by the solvent from the origin line. तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा होता है वो सोल्यूट का डिस्टेंस होता है और नीचे हमारा सॉल्वेंट का डिस्टेंस होता है. सो द आर एफ वैल्यू जो कि हमारा रिटार्डेशन फैक्टर होता है of a particular substance is characteristic of that substance and defines its movement in a given chromatographic system. The RF value of a substance depends on the following factors. The first one is solvent used, second is quality of paper, third is nature of the mixture, fourth is temperature, and last one is the size of the chamber. Now we will see the observation table. So here is our observation table. Is distance travel by the solvent was 11.5 जो कि सेंटीमीटर में होगा. ग्लूकोज के द्वारा जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये भी सेंटीमीटर में होगा, हमारा 9.5 आएगा. एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मल्टोज जो कि सेंटीमीटर में है ये हमारा 8.5 आता है. नाउ वी विल गो थ्रू विद इट्स कैलकुलेशन. सो आर एफ वैल्यू फॉर ग्लूकोज इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई ग्लूकोज अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सॉल्वेंट जो कि हमारा 9.5 अपन 11.5 आता है और इसको कैलकुलेट करने पे 0.826 आता है. देन आर एफ वैल्यू फॉर अ मेल्टोज विल बी कैलकुलेटेड. सो मेल्टोज के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अपॉन सॉल्वेंट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया. तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 0.73 आती है. देन we will see the result. By using the chromatographic technique, the RF values obtained for glucose is 0.826 and for a maltose is 0.73. So this was the second experiment. Thank you.